Hello, this is the lecture number 8 for the chapter Triangles for the class 10th, and in the last lecture we have discussed a theorem which says that ratio area theorem, which says that ratio of the area of two similar triangles is equal to ratio square of their corresponding sides. Suppose these two triangles ABC and PQR are similar, they are similar, then the ratio of their area, that is area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to ratio of square of their corresponding sides. Corresponding sides says that AB PQ, BC QR and AC PR is equal to BC square upon it is BC square upon QR square, BC square upon QR square, it says that it is equal to AB square upon PQ square is equal to AC square upon PR square is equal to BC square upon QR square. This is the ratio of area of similar triangle is equal to ratio square of their corresponding sides we have done. Now in exercise 6.4 is based on this theorem only, that the ratio of area of similar triangles is equal to ratio square of their corresponding sides in 6.4. So let us take the question number 1 of 6.4, which says that if the triangle ABC, it is given that triangle ABC is similar to triangle DEF, and it is given that the area of this triangle is 64 meter square and the area of this triangle is equal to 121 meter square, and EF is given equal to 15.4 meter, rather centimeter, and you have to find here the corresponding side BC you have to find. So you can write area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to BC square upon EF square. Corresponding, if you have taken this BC, then its corresponding side at EF. Ratio you have to write it here. Ratio of area of similar triangles is equal to ratio square of the corresponding side. It is 64, it is 121, it is BC you have to find, and it is 15.4 ka square. Now you don't make the square of this, you simply remove the square from here and put the square root here, then the calculation will become easy. It will be 15.4. so BC is coming out to be, it is 8, it is 11, BC upon 15.4. This is, so you can easily find BC, which is coming out to be 11.2 centimeter. So this is the theorem we have used. The ratio of area of similar triangle is equal to ratio square of their corresponding side. This is the question number 1. Now what is given in question number 2? See it carefully. It is given that the diagonals of the trapezium ABCD, there is a trapezium ABCD in which AB is parallel to DC, their diagonal intersecting each other at O, and it is given that if AB is equal to twice of CD, so it means AB is bigger, AB is given that twice of CD, means if it is X then it is 2X. So let CD is equal to X, and therefore AB will be equal to 2X, and it is given that AB is equal to 2CD. It is given, and this line is parallel to this. Now we have done in the first exercise, that's the triangle, these two triangles AOB and triangle COD, they are similar because angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. This angle is equal to this, and this angle is equal to this because they are alternate angles. Lines are parallel.
तो triangle AOB is similar to triangle COD by AA similarity. Now because these two triangles are similar, we can say that area of ratio of their area AB upon area of triangle COD is equal to ratio square of the corresponding sides, which we can take AB and CD. So AB square upon CD square. So AB we have let equal to 2x and XCD we have equal to x. So it is coming out to 4 upon 1. So the ratio of area of these two triangles is coming out to be 4:1. Means the area of this triangle is 4 times the area of this when the ratio of their side is 1:2. So you have to find here the ratio of the area of triangle AOB upon area of triangle COD. यहाँ पे आपको इस ट्राइंगल्स की रेशो पता करनी थी, तो हमने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, उनके एरिया की रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। CD को हमने x माना, AB 2x है, बिकॉज इट इज गिवन दैट AB इज ट्वाइस ऑफ CD. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2. इट इज 4:1 रेशो वी आर गेटिंग. In question number, let us take 3. What is given in question number 3? If the figure ABC and BDC are two triangles having the same base, if AD intersect BC at O, then you have to show that the ratio of ABC and ABD are equal to OA upon OD. So read the question very carefully. There is a figure, quadrilateral. It is ABCD, and it is given that they are diagonals intersecting each other at O, and सेम बेस पर बनना है। कौन कौन से ट्राइंगल, ABC, ABC एंड ट्राइंगल DBC ऑन द सेम बेस BC, and the intersecting diagonal at O, and you have to prove that ratio of area of these triangles ABC upon area of triangle DBC, you have to prove that it is equal to OA upon OD. Now to prove that it is equal to this, we have to draw construction here. You have to draw AP perpendicular to BD and DQ perpendicular to this is Q. This point is Q we have taken. Okay, so draw AP perpendicular to BD and CQ perpendicular to BD. Now we can prove that these two triangles are similar, that is APO and triangle QCO. ये सिमिलर हो गए क्योंकि एंगल P एंगल Q दोनों 90 डिग्री के हैं, और एंगल POA इज इक्वल टू एंगल QOC. दे आर वर्टिकल एंगल्स. नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. APO and is similar to triangle COQ by A से सिमिलर हो गए. सिमिलर हमने इसलिए करा कि AP और CO की रेशो, PO और OQ की रेशो एंड AO और COQ की रेशो बराबर रहेगा. APO सिमिलर टू ये गलत लिख दिया हमने, CQO आया था, CQO. अगर ये ऑर्डर गलत हो जाएगा तो प्रूफ कभी भी नहीं हो पाएगा. सो APO ऑर्डर देखो, एंगल A एंगल P के बराबर और B Q के बराबर है, P Q के बराबर है, दैट इज़ वाई. तो AP अपॉन CQ इज इक्वल टू PO अपॉन QO इज इक्वल टू AO अपॉन CO. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर सिमिलर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC की रेशो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा, BC triangle, area of triangle ABC is equal to half base into height. The area of triangle ABC will be equal to half base into height, half BC into AP, half BC, half BD into AP, half BD into AP, एंड इसका हो जाएगा हाफ BD इंटू हाफ BD इंटू CQ. तो हाफ BD से हाफ BD कैंसिल हो गया, तो AP अपॉन PQ कहाँ है, AP अपॉन CQ किसके इक्वल आ गया, AO अपॉन OC के इक्वल आ गया, AO अपॉन CO के इक्वल आ गया.
This we have to prove. AO upon CO. Okay, this we have to prove. Okay, AO upon OD. Somewhat I've drawn some different figure from the given it is. So in place by mistake I have interchanged this D and C. I have interchanged this. So in the question you have to prove that it is equal to OA upon OD. OA upon OD. In the figure C here and D here, you have to prove OA upon OD. So that is why I am getting OA upon OC, because by mistake I have interchanged this D and C from the given figure. इनके एरिया की रेशो ABC और DBC जो ट्राइंगल है DBC, इनकी रेशो के बराबर आ रहा है कौन कौन से, OA और OC की. हमारा अगर D और C इसको इंटरचेंज कर देंगे तो OA और OD आ जाएगा. Means the same. Okay, so this is the question number 3. By mistake I've drawn this figure wrong. Now in question number 4, it is given that if the area of two similar triangle are equal, then prove that they are congruent. इसमें सीधी सी बात है, जब दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इक्वल गिवन है, तो जब एरिया इक्वल है और सिमिलर भी हैं तो सीधी सी बात है वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे. बिकॉज अगर एरिया इक्वल और सिमिलर है, मतलब सिमिलर है तो शेप सेम हो गई, एरिया बराबर तो शेप साइज भी सेम हो गया, तो नेचुरल सी बात है कि वो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे. तो गिवन क्या है, एक तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. You have to prove that the triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें साइड्स इक्वल करके दिखाने पड़ेंगे. तो बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग sides. BC square upon QR square and AC square upon PR square. Ratio of area of similar triangle, you have to write it here that the ratio of area of similar triangle is equal to ratio of square of their corresponding sides. ये हमारा हो गया. अब बिकॉज इनका एरिया इक्वल दे रखा है तो ये बराबर हो गए. ABC का एरिया PQR ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, तो इसका मतलब ये इक्वल हो गए. तो इक्वल हो गए, जिसका एरिया इक्वल है तो उनके रेशो इक्वल आ जाएगा. इट विल बी इक्वल. इट विल बी इक्वल. क्यों हमने इसका वन रखा, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के इक्वल है, तो इनका एरिया इक्वल है तो इनकी रेशो 1 हो जाएगी. नाउ यू कैन पुट दैम ऑल इक्वल टू 1, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी 1 के इक्वल हो गया, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर भी 1 के इक्वल हो गया, और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर की रेशो का भी एरिया रेशो 1 के इक्वल हो गया. तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम फ्रॉम दिस, AB इज इक्वल टू PQ. जब स्क्वायर बराबर है तो बना होगा BC किसके इक्वल, QR के इक्वल, और AC किसके इक्वल, PR के इक्वल. तो दोनों ट्राइंगल्स की ऑल द साइड्स आर बिकम इक्वल टू ईच अदर. सारी साइड्स इक्वल हो गई. जब ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी, बाय साइड साइड साइड. So these two triangles are congruent if the area is equal and they are similar also. So this is the question number 4 of this exercise number 6.4. Now in question number 5 it is given that DEF are respectively the midpoint of side AB, BC and C of triangle ABC. You have to find the ratio of area of DEF and triangle ABC. This you have to prove in question number 5. In question number 5 you have to prove that. So draw a triangle. There's a triangle ABC in which DEF, triangle ABC and triangle AEF, they are the midpoint of the respective sides, and it is given that DEF are midpoints of respective sides. Respective, अपने respective sides की midpoints हैं, and you have to find
रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की रेशो हमें पता करनी है। नेचुरल सी बात है 1:4 ही आएगा, ये 4 ये 1। Now because they are the midpoints, so you have done in class 9th that the midpoint theorem that DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC. Midpoint theorem you have done in class 9th, and BF, this is BF is equal to half of BC, it is given. So we can say that DE is parallel to BF and DE is equal to BF. ये हमने ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल हो गई। तो आपको पता है कि जब अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल होता है देन इट बिकम अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर DEFB इज अ पैरेललोग्राम। Similarly we can say that the ADFE and ADFE and DECF are parallelograms। ये भी पैरेललोग्राम हो गए, ये भी पैरेललोग्राम हो गए। नाउ वी कैन इजिली प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC, in triangle ABC and triangle FED, they will be similar. Why? Because angle A will be equal to angle E, opposite angle of the parallelogram, and angle B will be equal to angle E, opposite angles of the parallelogram. So angle A is equal to angle F and angle B is equal to angle E, opposite angles of parallelogram equal होते हैं। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल FED के बाय सिमिलैरिटी। तो वी कैन ईजिली फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FED is equal to ratio square of the corresponding sides, मतलब BC square upon BC square upon BC and ED square। रीजन आपको पता है इसका, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम पता है कि जो BC है या जो DE है हाफ ऑफ BC होता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। DE is half of BC by midpoint theorem. So in place of this DE, you can write half of BC. You can write half of BC by midpoint theorem. तो ये कितना आ जाएगा 4:1, क्योंकि हमें पता है DE जो है हाफ होता है BC क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं। We know that in midpoint theorem, two side midpoint, तो DE is half of BC. तो in place of DE I have written half of BC here. यहाँ पर D की जगह हाफ ऑफ BC लिख दिया, स्क्वायर करा तो 1/4 BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, तो 4:1 हो जाएगा। तो इनके एरिया की रेशो 4:1, मतलब ABC का एरिया 4 है तो DEF का एरिया 1 आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द 4th एक्सरसाइज। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।